Hello. Good morning. It's yet another day in life of amazing Simran. अच्छा, by the way, आपको लग रहा होगा कि oh my god, जिस मोड में मैंने अपना लास्ट वीडियो एंड किया था, I must be really stressed out. And you know what? I am. Psych! But I am not going to transpire that stress through this video. So it's a positive day. It's a new day. नई सुबह है, नई उम्मीद है कि आज हम कुछ ना कुछ definitely achieve करेंगे. तो आज का मिशन क्या है? I think I'll have to give you guys a little recap क्योंकि ये वीडियो रैंडम किसी को पहुंच सकते हैं और उनको तो ना सर पता है ना पैर पता है कि ये मैं किस चीज की बात कर रही हूँ. तो अगेन आई एम डॉक्टर सिमरन. आई एम मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम सिंगापुर टू प्रैक्टिस डेंटिस्ट्री. थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन में इशू आ रहा है जिसकी वजह से मुझे लास्ट मिनट इंडिया ट्रैवल करना पड़ा है. तो करंट व्लॉग्स आर अबाउट हाउ आई एम ट्राइंग टू रिजॉल्व दोज इश्यूज वेयर आई हैव टू फेस सरकारी ऑफिसेज एंड सरकारी पीपल एंड ट्राई टू गेट शिट डन. तू तो गया बेटे. आज का मुद्दा क्या है? इफ यू आर अ डेंटिस्ट एंड यू वांट टू प्रैक्टिस इन महाराष्ट्र, यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ अंडर द स्टेट डेंटल काउंसिल, व्हिच फॉर मी हैपेंस टू बी महाराष्ट्र स्टेट डेंटल काउंसिल. तो वो जो मुझे सर्टिफिकेट मिला था, मेरे को उस सर्टिफिकेट पे भी अपना नाम चेंज कराना है. यू हैव टू रिन्यू दिस सर्टिफिकेट एवरी ईयर. आई वाज ट्राइंग टू रिन्यू इट फॉर दिस ईयर इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर और वो हो नहीं पा रहा था. एंड आई वाज लाइक कि भाई क्या है, पेमेंट क्यों नहीं हो रही है, कोई लिंक नहीं आ रहा है पेमेंट. लिटिल डिड आई नो दैट दे एक्चुअली बिल्ट अनदर वेबसाइट. I went on that website, logged in through my credentials and was able to renew my certificate, which is great. But I also wanted to now change my name, right? तो उस पे था like you know process to change your name. तो मैंने online application डाल दिया है उसका. अब उस पे status पे ये दिखा रहा है that I have to submit my original certificate and documents, जिसके लिए आज मैं वहां जा रही हूँ. Actually मैं जाने वाली कल थी, लेकिन little did I know जो सरकारी ऑफिसेज हैं उनके बहुत ही ऐसे शॉर्ट टाइम्स होते हैं. तो मैं निकली थी कुछ आई थिंक घर से ही 11:30 बजे. बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, गॉट द टिकट, रीच स्टेशन प्लेटफॉर्म जहां से मुझे लोकल पकड़नी थी क्योंकि आई थिंक वाशी से CST जाना इज वेरी इजी. वहां पे आई रियलाइज कि मतलब 12:15 कुछ हो गए थे. जो लोकल आनी थी वो डिले हो जा रही थी. सो आई वाज लाइक कि अगर मेरे को इतना टाइम लग रहा है, मैं टाइम तक पहुंच नहीं पाऊंगी वहां पे. एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट रश एंड लाइक यू नो एक गलत स्टेप ले लिया तो इट्स गोइंग टू कॉस्ट मी एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू बी फ्रस्ट्रेटेड. तो मैंने अपना थोड़ा प्लान चेंज कर दिया. तो कल मैंने अपना NMMC वाला काम किया है और आज मैं निकल रही हूँ. इट्स 9:30. आई एम जस्ट गोइंग टू लाइक यू नो क्विकली लीव नाउ एंड गेट द फर्स्ट local that I can get to go to CST and get this thing sorted. Hopefully this should be a very straightforward process. इसमें ज्यादा ऊपर नीचे कुछ होना नहीं चाहिए. It's just that they say that on at least online it shows that once you submit your documents from that day it takes about 25 days, maximum 25 days for them to issue your new certificate. So I want to go them and talk to them in person कि सर 25 दिन तो मत लगाओ प्लीज. और ये 25 दिन क्या सैटरडे संडे इन्वॉल्व करते हैं, क्या पब्लिक हॉलिडे इन्वॉल्व करते हैं? तो आई नीड टू गेट क्लैरिटी ऑन दैट एंड आई नीड टू आस्क देम कि इज देयर अ वे दैट दे कैन लाइक यू नो डू अ तत्काल सर्विस, एक्सप्रेस सर्विस एंड लाइक यू नो इशू दिस सर्टिफिकेट सून. अगेन आई ट्राई टू कॉल देम बट उन्होंने 2 नंबर दिए ऑनलाइन और भी अवेलेबल ही नहीं है. आई मीन द नंबर इज आउट ऑफ सर्विस. डिड सेंड देम एन ईमेल एंड आपको पता है इंडिया में ज्यादा फीमेल पे ध्यान दिया जाता है, ईमेल को बिल्कुल भी नहीं दिया जाता. हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. It's 9:30. I think I should leave. पकड़ बहुत चल रही है and I'm sorry. I was just editing my first vlog yesterday and I realized कि मेरा पहला vlog ही थोड़ा लंबा हो गया है. You're seeing me after a long time. You're gonna see me for a long time. तू समझा? हाँ. नहीं, तू समझा नहीं. वो वाला सिचुएशन होगा. तो आप आई मीन आई एम ट्राइंग टू कीप दिस एज शॉर्ट एज आई कैन बट मैं क्या करूं भाई, मैं हूँ आदत से मजबूर. पकड़ बननी होती है. बट आई एम कॉन्टेम्पलेटिंग इफ आई शुड ऑर्डर ब्रेकफास्ट और इफ आई शुड जस्ट ईट समथिंग एट द स्टेशन एंड देन जस्ट लीव. फिर कुछ चाहिए, खाना तो चाहिए सिस्टम में, वरना फिर दिमाग चलता नहीं है मेरा बराबर. What do I do? I think I'm just going to eat something at the station and then leave from there. All right. Let's go. I got this bag though from Thailand. Pretty nice, right? अभी तक इसको यूज करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इसमें अभी इतनी सारी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट, लैपटॉप, blah blah. It's the most convenient bag. Let's head to the station, darlings. Shall we? पहले the minute you enter the station you could buy the ticket here and it was so convenient कि आपने बस यहाँ से टिकट लिया and then you can just straight walk to the platforms. But now you have to go to the ticket counter and get a ticket from there. I mean, he would charge like probably some
rupees extra, which was fine over convenience, right? But now I have to go all the way till the ticket counter, which is all the way there. These are the platforms. I wanted poha. Poha is love. Poha is life. But they didn't have poha. So I got a very sad looking upma instead. Fish are right? I'm going to enjoy some upma. Honestly, it doesn't taste that bad. Restaurant for the day. Do not judge a book by its cover. Acha, yeah, take care. And also got a coffee. So why not? बहुत ही गर्म कॉफी है यार, कटिंग लेनी चाहिए थी. कैसे खत्म करूंगी? Food stalls. There's Krishna on the other side of the ticket counter, and then there's Jumbo King. Let's head to the platform. 4 platforms. 1, 2, 3, 4. I have to go on platform number 4 because that is where my train will leave from and take me to CST. This train is going in that direction. We have to go in that direction. We are going to wait for a train to arrive from right above here. A few moments later. ये तो उस डायरेक्शन में जा रही है. ये कहाँ जा रही है? I have a feeling this train also went to CST. हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अगली ट्रेन पकड़ लेंगे. हमारे पास काफी टाइम है आज. I wait on the train. Some people would call it full. It's not that full. It gets insanely mad in here. This is decent. I have space to stand. In the local train, lady section, yeah. Especially during peak hours, you will see कि कुछ ना कुछ चिल्ली तो होती ही है. Okay, it's just unavoidable. There are too many women involved, and most of the times these women are also frustrated from their work and all of that. तो कुछ ना कुछ चिल्ली होगा. Okay, you will see women from all walks of life. There are some people who will get on to sell things that I've shown you in the video. Then there are some transgender people who will just get on, ask for some money, of course, and then you give it out of respect, out of fear, whatever it is. Fun note, अभी एक transgender इंसान चढ़ा था. I just gave like 20 rupees to them, 20 rupees to them, and she said, जितना cute आप हो, उतना ही cute आपका bag है. So I was like, that made my day. 20 रुपए में खुशी मिलेगी भाई. So yeah, next station is going to be CST, and apparently the Maharashtra State Dental Council is in St. George's Hospital. It's a government hospital which is apparently walking distance from CST railway station. I've been there once before, but रास्ता मुझे याद नहीं क्योंकि मैं एक ही बार पहले गई हूँ, शायद 2 बार. This will be the 3rd time, and after 6 years, of course. So. That's the Maharashtra Dental Council, which is on 3rd floor at St. George's Hospital. But anyways, the thing is that they've told me that since they're going to issue me a new certificate, it can take up to 30 days. It can even come before that, but it will take up to 30 days. That means somewhere around mid-March. And they've said it at my registered address. That's a lot of time that they're going to take, but it is what it is. There is no express, fast service, Tatkal. There's nothing. I'll have to just now wait. But anyways, at least there was no hassle in it. It is done. It is submitted. So good. We are back to the original problem. So what do I do now? Probably going to just head back because I have nothing much to do here anyways. So I'm going to head back home. Yay. A few moments later. So they charged me 600 rupees to do the name change. I mean, I'm ready to pay the money, bro. Just do the task for me. Anyways, all right. I'm heading home. A few moments later. So as you can see, government hospitals ka haal kuch zyada hi bura hai. The treatments are done for much cheaper, but also then the waiting is a lot longer. I think that is the scene everywhere globally. If you go to a government hospital, you will have to wait for your treatment. I think that's where private practices have an upper hand. Other than the ease and convenience, there's also like get treatment much faster. All right, that's my 2 cents here, and I'm going to get back home. ये मैं 4 बार बोल चुकी हूँ. अब मैं जा रही हूँ घर. सच्ची.
Alright, I'm now going to unwind for the next 45 minutes. That's how it takes for me to reach from CST to Vashi. I'm going to probably finish reading. भाई मैं जब भी बात करती हूँ कोई ना कोई इंटरप्ट करने का, ये कहाँ से बात है? अरे जुगलबंदी चल रही है, जुगलबंदी. Yay! I think it was a very productive day. जो intention से वो set किया था, we were able to follow it and accomplish it, and all the adjectives that I can put in just to say that it was a successful day. तो क्या नाचोगे? Okay, अब आगे क्या होगा? We don't know. It's suspense. It's just that the side quest, which was this Maharashtra State Dental Council, is solved, but the main quest, which is the certificate from my university, is still on. मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ. So for that I'll have to go to Pune. I have to meet my professor on Monday morning. जिसके लिए मैं शायद पुणे Sunday ही चले जाऊँ, क्योंकि Monday सुबह निकलना पड़ेगा. And I have a feeling a lot of these people who work office वाली जनता है, वो भी सब बॉम्बे से पुणे जा रही होगी, and बहुत hodgepodge हो जाएगा. तो just for my own sanity and just because I have a friend and a family who lives in Pune, probably going to go to Pune on Sunday and then start whatever it is and hopefully figure it out on Monday and Tuesday. Anyways, ये तो बहुत आगे की बात होगी. Hold it. I'll sort all of that. I'll do it. Okay. So that's it. I think I'm going to wind up this video right here, right now, and call it a day. I hope you guys are enjoying my vlogs. I mean, I'm just taking you through the process of it, and this probably helps other dentists who are also going through this similar process and are trying to understand how to solve these issues if they are also facing this. Otherwise, अगर आपको मेरी बातों का स्टाइल पसंद है तो आप ये ऐसे enjoy कर ही रहे होंगे. ठीक है? अगर कर रहे हो तो you know what to do. Like, share, subscribe. Please do so. And that's it. Until next time, you guys take care and keep smiling. Bye.